ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्तु, तर्हि अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति अभ्यास 18, परन्तु पृष्ठक्रमाङ्कः 37 प्रथमः। ह्यः वयम् अपश्यामः नियम 81 नियम 81. There was a question. It is not clear. Obviously, it wasn't clear yesterday. पात्र आस्पद स्थान पदभाजन और प्रमाण शब्द जब विधेय के रूप में प्रयोग होंगे तो इनमें नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा। उद्देश्य रूप में होंगे तो अन्य वचन भी होंगे। तो yesterday we were seeing this उद्देश्य and विधेय. We don't have to overthink. We have this tendency of overthinking answers. I think we did the same yesterday. Subject and predicate. उद्देश्य subject, विधेय predicate. When उद्देश्य is the main point of the sentence. जैसे गुणाः पूजा स्थानम सन्ति, यहाँ पे गुणाः is in विधेय रूप, पूजा स्थानम गुणाः, तो स्थानम एकवचन is used. But when it is an उद्देश्य रूप, जैसे the final अंतिम दृष्टान्त अत्र सप्त पात्राणि सन्ति, here there are 7 patras. In this way it is used in bahuvachana. It will not be saptapatram santi, saptapatrani. तो यतः अत्र उद्देश्य शब्दः अस्ति पात्र। अन्य स्थाने गुणाः पूजा स्थानं यूयं मम कृपापात्रं, कृपापात्रं विधेय शब्दः अस्ति, तो एकवचनम् अस्ति. In this way when we see, it becomes very simple. But there are better examples. These examples are a little confusing because this gunaha puja sthanam santi, for a long time even I was thinking, how is this vidheya? It was not easy to understand this. I didn't find time to find examples, but I will find over the weekend and we can discuss again. But in this way, when it is uddeshya, it can be in any vachana. When it is vidheya, it will always be in ekavachana, nitya ekavachana shabda. अस्तु, ह्यः वयम् अपश्यामः पात्रं भाजनम् आस्पदं सर्वे, अपि च धातवः स्पर्ध धातु, शङ्ख धातु, चेष्ट धातु, कृप् कल्प धातु, पलाय धातु, द्योत धातु, वेप धातु, त्रप धातु, सर्वे धातवः अद्य अपि भविष्यन्ति, अद्य अपि सन्ति. उदाहरणवाक्ये संस्कृत बनावो इति अभ्यासे सर्वे धातवः सन्ति. अस्तु, झलां जशोन्ते we will see at the end, संधि सूत्र after अभ्यास. उदाहरणवाक्य पृष्ठ क्रमांक 37. उदाहरणवाक्य प्रथमः एक बालक एकः बालकः, एका बालिका एक बालिका, एकं फलम् एक फल. अस्तु, सुमंजय जी कृपया वदतु, एकं बालकम् एका बालिकाम् एकं फलं छात्राण्य किम् अस्ति हिंदी अथवा इंग्लिश में?
I have to translate. Yes. Okay. So from Udaharan Vakya, right? Okay. Number 4. Chaturth. The fourth one. The fourth. Ekam balikam balakam. Ekam balakam, eka balikam, ekam phalam cha atra anaya. Samyak. Ekam balakam, one balak, that is an eka balika, one balika. Ekam balikam. One phalam. So all of these are the Dvitiya vibhaktis here. So these have to be brought. Cha, so bring one balaka, one balika and one phala. Cha, so that is the and. Atra, here, anaya. So this is lot laka. So bring. Bahu samyak asti. But we can simply say everything you said was completely correct. But we can simply say bring one balak, one balika and one palam here. This will be easy translation. Chatranaya. Kasmin sandhi sutra asti? Kopi vadati va? Dirgha sandhi? हाँ, dirgha sandhi asti. Sandhi sutra kim kasmin? Kim sandhi sutra asti? Vriddhirechi? Nasti. No. Dirgha will come in. Akah savarne dirgha? Samyak. Akah savarne dirgha. Samyak asti Chaitulji. Akah savarne dirgha. Astu. Sumanjay ji bhavaneva. Ekadasha. Kim bhavati? Translation. Suryah pratah kale dyotishyate. Suryah as in sun, pratah kale, saptami vibhakti, in pratah kala, morning, dyotishyate. So dyotana means to light up or to rise here in this case, and it is atmane padi, and this is rit lakara, so it will rise in the morning. Samyak. Or you can say it will shine also. द्योत धातु चमकना के अर्थ में यहाँ पे दिए हैं अभ्यास में. You can say will rise, will shine. Both are correct. बहु सम्यक् अस्ति. अस्तु. संध्या जी कृपया वदतु. पंचम. Yes, I'll start. एकस्मै बालकाय एकस्मै बालाय च फलानि वितर. एक सेकंड. एक बालक. ट्रांसलेशन बोलिए. एक बालक को एक बालिका को फल दो. बहु सम्यक् अस्ति. एकस्मै बालकाय एकस्यै बालायै च फलानि वितर. ट्रांसलेशन इज करेक्ट. बहु सम्यक्. अस्तु. भवती एव वदतु. कस्मिन् भवती एव वदतु. 12. स गुरुं सेविष्यते दुःखं सहिष्यते मोदिष्यते वर्धिष्यते च. मैं गुरु को सेवा करता हूँ, दुख सहता हूँ. मोदिष्यते was exact. मोदिष्यते meaning प्रसन्न रहना. हाँ. और वर्धिष्यते पूजता हूँ. हाँ. वर्धिष्यते I will grow. सः अहं नास्ति. सः गुरुं सेविष्यते. He will do. वो करेगा. वो गुरु को सेवा करेगा, दुख सहेगा, प्रसन्न रहेगा और बढ़ेगा. अर्धिष्यते. He will grow. ऐसा सम्यक्. आभा जी कृपया वदतु. 6. त्वं धनानां पात्रम् आस्पदं स्थानं पदं भाजनं वा असि. त्वं is you all.
त्वम् इस् यू Plural. न एकवचनम् अस्ति यू त्वम् इस् एकवचन. त्वम् इस् यू. धनानां धन को पात्र में रखो. ओके. आस्पदम स्थानम इज प्लेस. एक सेकेंड एकनिमिषः पात्रम् आस्पदं स्थानं पदं भाजनं सर्वे पर्यायवाची इति शब्दे अस्ति शब्दानि सन्ति. ओके. सो दे ऑल मीन स्थान हियर. You keep the dhanam, dhana. Dhananam is again plural. There's lots of dhan. Is that what it is? करेक्ट. Aspadam, sthanam, padam, bhajanam, va, asi. So, in any of this place or patra, you keep it. asi asi शब्द मीन्स यू आर. asi त्वं तत्वम asi जैसे यू आर दैट asi. सो त्वं धनानां पात्रम asi means you are the patra of dhana. धनानां षष्ठी बहुवचन of all dhana you are the patra. वैसे बोल रहे हैं त्वं धनानां पात्रम Compliment. हाँ sorry. This is kind of a compliment. Yes, they are saying you are the patra, you are getting all of this, that is you are getting dhana, all this dhana you are the patra, you are getting. Tvam dhananam patram aspadam sthanam sarva asi, you are all this, you are this rather. Okay. सम्यक्. भवती एव वदतु कृपया सप्तम. पात्रेषु भाजनेषु वा जलं वर्तते. वर्तते means bring. वर्तते मीन्स अस्ति जैसे अस्ति अपि वर्तते पर्यायवाची शब्दे स्तः. अस्ति भवति वर्तते दे आर ऑल वेरी सिमिलर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. वर्तते मीन इट इज, दैट्स ऑल. So in that patra there is jal. यस सम्यक् बहु सम्यक्. सी व्याकरण पिक्स अप क्विकली. पात्रेषु भाजनेषु वा जलं वर्तते. जलम इज देयर इन दैट पात्र. सम्यक्. केतुल जी कृपया तो अष्टमा. आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति. हाँ. तुम सब उस स्थान में हाँ. रहो. ते सह तौ ते. सह इज हाँ तो ते इज बहुवचन. सह तौ ते आप सब वे सब. वे सब. ओके. हाँ तो वे सब हाँ उस स्थान में हाँ रहते हैं, ठहरते हैं. रहते हैं. हाँ तिष्ठन्ति रहते हैं मतलब बैठते हैं बोल सकते हैं, या बेटर इज दे आर स्टेइंग रहते हैं. दे आर स्टैंडिंग ऑल्सो इज तिष्ठन्ति. स्था धातु ठहरे हैं. हाँ वैसे आस्पदेषु स्थानेषु वा ते तिष्ठन्ति. दे आर ऑल स्टैंडिंग इन दोस स्थान. हाँ अस्तु. भवानेव वदतु कृपया. भवन्तः प्रमाणं सन्ति. भवन्तः प्रमाणं सन्ति. हाँ भवान् भवन्तो भवन्तः. भवान् वदतु जैसे भवन्तः. आप ही प्रमाण हो. आप हाँ प्रमाण हो. आप सब आप सब प्रमाण. सम्यक् बहु सम्यक्. हाँ अस्तु. अवन्तिका जी कृपया वदतु दशम. लिटिल डिफिकल्ट यू कैन डू दशम. सः एकाकी अध्ययनं पलायिष्यते. हाँ वह हाँ एकाकी अध्ययन से हाँ. पलायन करने की कोशिश कर रहा है. नहीं पलायिष्यते इस ये भविष्य का हाँ हाँ पलायन कर पलाय धातु है भागने का अर्थ में. भागना. तो ये थोड़ा कॉमेडी सेंटेंस है. हाँ
वह एकाकी अध्ययन से भाग जाएगा। भाग जाएगा। एकाकी अध्ययन से वह भाग जाएगा, सिर्फ मतलब केवल अध्ययन से, तो उसको और अच्छा, कुछ एकाकी मीन्स अलोन। हाँ, केवल एकाकी, ओनली दैट। वैसे दिए हैं ना यहाँ पे इन पेज 36 ऐसे भी। हाँ, एकाकी ना अकेला, राइट। तो अकेला अध्ययन से तो भाग जाएगा, तो उसको और कुछ भी चाहिए। हाँ, सह एकाकी अध्ययनात् पलायिष्यते। बहु सम्यक्। सुंदर जी अंतिम। हाँ, एके एवं वदन्ति अन्ये एवं कथयन्ति। एक केवल बोलता है और सब बाकी सब अन्य सब केवल सुनते हैं। केवल विल बी एव, यहाँ पे है एवं। एवं एवं, ओके, सो एवं। एंड वन मोर दे आर गिवन वदन्ति। वदन्ति इज बहुवचन। हाँ, इट इज कंफ्यूजिंग। एके एवं, the word eke is one by one, is it? Are they trying to say one by one? Yes, so एक ग्रुप, सहा तौ ते, वैसे एक है एक एके। Eke. It is a complicated word, it is not often used actually, but we have to understand it like this. एक मतलब एक ग्रुप ऐसे बोलते हैं, एवं वदन्ति। Okay. अन्ये एवं कथयन्ति। एवं कथयन्ति, the other group will only listen. नहीं, वैसे बोलते हैं, कथयन्ति भी वदन्ति है। एक ग्रुप वैसे बोल रहे हैं, वो ग्रुप वैसे बोल रहे हैं, वैसे अन्ये एवं कथयन्ति, एक ही एवं कथयन्ति। ये वैसे कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वो वैसे बोल रहे हैं। So that's like your पूर्व पक्षी। हाँ, like your पूर्व पक्षी, yes। एक एवं वदन्ति, अन्ये एवं कथयन्ति। अस्तु, बहु सम्यक्। हाँ, सुंदर जी, भवान् एव घ इति प्रथमः, मतलब एकविंशति। एकविंशति, 21. Okay. So 21 is इन छात्रों में एकता है, ये एक प्रकार से ही सब कार्य करते हैं। So एतस्मिन् छात्रेषु, in this group of people, छात्रेषु सम्यक् अस्ति, परन्तु छात्रेषु यदि अस्ति एकस्मिन् नास्ति। एतेषु छात्रेषु एतेषु छात्रेषु एकत्व अस्ति, they are one। हाँ, एकत्व अस्ति, एकता अस्ति। हाँ, एकता अस्ति। Then after that ये एक प्रकार से, so तेषु, this group of people, तेषु ये, so तेषु एकदा एव सर्व कार्याणि कृते, करते हैं, तो लट लकार। Will it be कृते or not? It will be करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। So everything else you said is correct. मतलब एतेषु छात्रेषु एकता अस्ति, एतेषु छात्रेषु एकता अस्ति। तेषु एकता एव, because एवं, हाँ ठीक है, से ही, एक प्रकार से ही एकता एव सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। सम्यक्, बहु सम्यक् अस्ति। हाँ, अस्तु। अवन्तिका जी कृपया वदतु, ग इति, ग इसमें प्रथमा, 11। वह स्पर्धा करेगा। सः स्पर्धा करिष्यति। हाँ, सम्यक्। सः स्पर्धिष्यते, स्पर्धा करिष्यति। सम्यक्, वेरी नाइस। अस्तु। केतुजी कृपया वदतु, ख इति प्रथमा, मतलब सप्तम। तुम सारी विद्याओं के एकमात्र पात्र हो। हाँ, हाँ, संस्कृत भाषा है। तुम सारी विद्याओं के, त्वं हाँ, सर्वं विद्यां हाँ,
एकमात्रं हाँ पात्रं पास्तकं स्थानं पदं भार्यं वा हाँ वा त्वं वा किं भवति त्वं पात्रं डाश् असि सम्यक् अस्ति त्वं यू कैन से सर्वासां विद्यानां क्योंकि सर्वासां विद्यानां विद्या के षष्ठी बहुवचन विद्याओं के तो विद्यानां एंड विद्यानां इति सर्वासां विद्यानां एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट एकमात्रं पात्रम् असि बहु सम्यक् अस्ति अस्तु आभाजी प्रथम द्वितीय क द्वितीय वहाँ क द्वितीय हाँ मतलब वो वहाँ एक बालिका है वहाँ एक बालिका है तत्र हाँ एक विल बी एक और एकः एक नॉट एक बट यू वांट टू से बालिका तो इट विल बी इफ इट इज बालकः इट इज एकः बालिका एकाः एका सम्यक् एका हाँ तत्र एका हाँ बालिकाः अस्ति बालिका अस्ति सम्यक् बालिका नो विसर्ग तत्र एका बालिका अस्ति बहु सम्यक् अस्ति अस्तु सन्ध्याजी कृपया वदतु किं वदति भवती प्रथमः यह एक बालक है हाँ यहाँ एक बालक है यहाँ अत्र हाँ एकः बालकः अस्ति हाँ सम्यक् अत्र एकः बालकः अस्ति यहाँ पे विसर्ग है एका बालिका में विसर्ग नास्ति अस्तु धन्यवादः सुमञ्जय जी कृपया वदतु कस्मिन् षष्ठ एक विद्यालय में षष्ठः अहम् एकस्मिन् विद्यालये पठामि सा च विद्यालये अथवा पाठशालायां पठति बहु सम्यक् अहम् एकस्मिन् विद्यालये पठामि सा च एकस्मिन् पाठशालायां पठति अथवा एकस्मिन् विद्यालये सा च पठति यू कैन से दैट च कैन गो इन 2-3 प्लेसेस सम्यक् बहु सम्यक् अस्ति अस्तु अशुद्ध टु शुद्ध सर्वेषां कोऽपि आभाजी कृपया पठतु अशुद्ध शुद्ध किं भवति सर्वेषां विद्यानां पात्राणि ये अशुद्ध है शुद्ध वाक्य सर्वेषां इज ओके नहीं दिया है ना यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट दे हैव गिवन रीड ओके सर्वे व्हाई इज इट सर्वेषां सर्वासां क्योंकि सर्वासां हाँ क्योंकि विद्या शब्द इज स्त्रीलिंग एंड सर्व षष्ठी बहुवचन और सर्व स्त्रीलिंग विल बी सर्वासां नॉट सर्वेषां यू हैव टू सी लिंग हाँ सर्वासां विद्यानां पात्रं हाँ सर्वेषां विद्यानां पात्रं नास्ति सर्वासां विद्यानां बिकॉज विद्या इज स्त्रीलिंग एंड पात्राणि नास्ति पात्रं बिकॉज यहाँ पे इट इज विधेय इट इज नॉट उद्देश्य इट इज विधेय प्रेडिकेट सर्वासां विद्यानां पात्रं सो इट इज पात्रम् एकवचनं संध्या जी कृपया पठतु द्वितीय भवन्तः हाँ विद्यायां प्रमाणः सन्ति हाँ। भवन्तः विद्यायां हाँ प्रमाणं सन्ति प्रमाणं सन्ति भवन्तः प्रमाणं विद्यायां प्रमाणाः नास्ति विद्यायाः प्रमाणं बिकॉज अगेन इट इज विधेय यू आर डिस्क्राइबिंग विद्या यू आर प्रमाण ऑफ विद्या तो इट इज प्रमाणम ओनली अस्तु धन्यवादः 2 क को बहुवचन बनाओ
जल्दी करते हैं। केतु जी कृपया वदतु प्रथमः नहीं पंचदश चोर भाग जाएगा बहुवचने। चोराः करिष्यन्ते। हाँ, बहु सम्यक्। चोराः करिष्यन्ते। It will be they had given palayate, right? Palayishyate, तो पलायिष्यन्ते, चोराः पलायिष्यन्ते, बहु सम्यक्। हाँ, अस्तु। अवन्तिका जी कृपया वदतु षोडश बहुवचने। सूर्य एकं पुरुषः। हाँ, तो सूर्यः एकवारं फिर सूर्याय एकवारं पुनः ज्योतिष्यति। हाँ, ज्योतिष्यति। तो बहुवचने सूर्यः हाँ एकवारं हाँ पुनः हाँ ज्योतिष्यन्ति। सूर्याः मतलब सूर्याः एकवारं पुनः ज्योतिष्यन्ति। सम्यक्, बहु सम्यक्। संध्या जी कृपया वदतु 12 वह शंका करेगा। वह शंका करेगा। Would we say Suryaha at all because one sun, right? Would we Yes. just say Suryaha or Suryaha we can say? सूर्याः। Did I say सूर्याः? Sorry, it is सूर्याः। No. You said Suryaha. सूर्याः। So, but we don't have many suns, right? I mean, it's like Yes, but we cannot also say that Surya is shining, Surya in Ekvachana and shining in Bahuvachana. That doesn't make any sense. It is not a meaningful sentence. It is only for the sake of translation. Suryaha Jyotishyati. You can say like in some other galaxy, some other Surya, something. Suryaha. If we want to say so many Rashmis Jyotishyati. हाँ, many Rashmis you can say. Suryaha. Then we have to use Rashmi word. Yes. If we want to use Jyotishanti. Samyak. Exactly. You have to use that word. But that word is not here, so you have to just say Suryaha Jyotishyati. But Samyak. Exactly. You have to use that word if many rays are shining. हाँ, अस्तु। संध्या जी कृपया वदतु 12। Yeah. ते शंका करिष्यन्ते। सम्यक, बहु सम्यक। ते शंका करिष्यन्ते अथवा यहाँ पे देयर इज वन। हाँ, किं भवति? शंकिष्यते, तो शंकिष्यन्ते वैसे। हाँ, ते शंका करिष्यन्ते इज करेक्ट। ते शंका करिष्यन्ते, जैसे ये पूर्व पक्षी वाले दे कीप डूइंग शंका। ते शंका करिष्यन्ते अथवा ते शंकिष्यन्ते, बोथ आर करेक्ट। धन्यवादः, सम्यक्। आभाजी कृपया वदतु प्रथमः। मतलब 11। यहाँ एक बालक है। नहीं, 11। वह स्पर्धा करेगा। हाँ, वह स्पर्धा करेगा। हाँ। So ते स्पर्धा करिष्यन्ते। सम्यक्। ते स्पर्धा करिष्यन्ते अथवा ते will not become plural. It will. You can say both. स्पर्धिष्यन्ते also you can say. ते स्पर्धिष्यन्ते अथवा ते स्पर्धा करिष्यन्ते. Both are okay. Yeah, but if I have to use the word spardha as it is, it will not become plural. It will. Spardha. स्पर्धिष्यते, 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 स्पर्धिष्यन्ते, तो ते स्पर्धिष्यन्ते। जैसे भवती वा अवदत् करिष्यन्ते इति वदति। स्पर्धिष्यन्ते is one form. Yes.
ते स्पर्धा करिष्यते is another form. करिष्यन्ते. Te spardha karishante is another way of saying it. हाँ. But just the word spardha in itself, हाँ. does it also have a plural like competitions like spardhaha? अच्छा, यहाँ पे नहीं. Not here, because यहाँ पे स्पर्धा करेगा. He is only doing effort. Spardha is not the sanya shabda, because here spardha is taken as dhatu, right? Spardh dhatu is here. He is competing. If you want to say competition, here there is no necessity of using the dhatu, making the dhatu into a sanya. So we can just keep it as dhatu. If at all that comes, then they will give the form there. Here all they want is bahuvachana of whatever is here. Sanya. Sumanji ji कृपया तो चतुर्दश 14th बहुवचने. There is a bracket given. So we have to do the bahuvachana, right? सम्यक. Fine. विद्या धर्म के लिए होगी. कृप हाँ. विद्याः हाँ. धर्माय हाँ. कृप्स्यन्ते. हाँ. विद्या, not विद्या. विद्या is स्त्रीलिंग शब्द है. स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन विद्या. I was doing lata, late, lataha. So vidyaha. अच्छा. In bahuvachana you want to say. Yes, correct. Okay. Vidyaha. You are saying. You are correct. Vidyaha. Then. Karmaya kripsyante. But if you want to say vidyaha, do you also want to say dharmaya? Chaturthi vibhakti bahuvachana api asti dharmaya. धर्म शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचने अस्ति धर्माय, परंतु बहुवचने धर्मेभ्यः. सम्यक्. विद्याः धर्मेभ्यः कृप्स्यन्ति. कृप्स्यन्ति or कृप्स्यन्ते? That's what I am seeing. They have given it here. Have they given it in the fonts? Kalp dhatu they have given. Kalpishyante. Oh, in my edition it's written krip. I mean the hard copy. Krip. So I Samyak, parantu krip kalp dhatu they have given us hona in abhyasa. Oh, kalpishyante, yes. So vidyaha dharmebhyah kalpishyante. Samyak. Samyak asti. Astu. Sundarji कृपया वदतु त्रयोदश. सुंदरजी अस्ति वा? So तू चेष्टा करेगा. So therefore चेष्टा के लिए चेष्टिष्यद्वे. हाँ, सम्यक्. बहु सम्यक्. चेष्टिष्यद्वे. यूयं चेष्टिष्यद्वे. सम्यक्. अस्तु. अभ्यास चत्वारा अभ्यासक. एक शब्द के तीनों लिंगों पे के पूरे रूप लिखो. दैट यू हैव टू डू, और एटलीस्ट से इट आउट. इफ यू डोंट हैव टाइम टू राइट एवरीथिंग, एटलीस्ट टू से आउट इज अ गुड प्रैक्टिस. इन धातुओं के लिट के पूरे रूप लिखो. सेव लब रुद्ध सर्वे. तो लिट में वैसे सेविष्य, वी कैन डू वन वन. सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते. सेविष्यसे सेविष्यते सेविष्यद्वे. सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे. केतुजी कृपया वदतु लब धातु किं भवति? लविष्यते लविष्येते लविष्यन्ते. लविष्यसे लविष्येते लविष्यद्वे. लविष्ये लविष्यावहे लविष्यामहे. बहु सम्यक्. लविष्ये लविष्यावहे लविष्यामहे. सुंदरजी कृपया वदतु मध्यमपुरुष द्विवचन वृद्ध धातु किं भवति? वृद्ध धातु.
वृद्धिष्येते वर्धिष्येते वर्धिष्येते सम्यक् वर्धिष्येते आभाजी कृपया वदतु मुद् धातु प्रथमपुरुष बहुवचन मुदिष्यते बहुवचन उदिष्यते मोदिष्यन्ते सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते ऐसे मोदिष्यते मोदिष्यते मोदिष्यन्ते सम्यक् हाँ अवंतिका जी कृपया वदतु सह धातु मध्यमपुरुष बहुवचन अवंतिका जी अस्ति वा हाँ। Sorry. सहिष्यद्वे 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 सम्यक् संध्या जी कृपया वदतु याच धातु नहीं याच धातु नहीं भाष धातु उत्तम पुरुष एकवचन भाषिष्ये सेव धातु has become सेविष्ये so भाष धातु has become भाषिष्ये हाँ सुमंजय जी कृपया वदतु रम धातु नहीं ईक्ष धातु this is an interesting dhatu that comes often in Upanishads ईक्ष धातु प्रथम पुरुष द्विवचन ईक्ष्यसे no ईक्ष्यसे will be in lat lakara only. yes lit lakara prathama purusha dvivachana will be so will be ईक्षिष्यसे ईक्षिष्येते ईक्षिष्यत्वे हाँ प्रथम पुरुष द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन सॉरी ईक्षिष्येते सम्यक् ईक्षिष्येते बहु सम्यक् ईक्षिष्येते अस्तु एक वाक्य बताना है केतुल जी कृपया वदतु प्रथमः प्रमाणम् अपि च एकस्मिन् उपनिषदः एकस्मिन् ब्रह्मप्रमाणमस्ति उपनिषदः एकस्मिन् ब्रह्मप्रमाणम् अस्ति एकस्मिन् will be सप्तमी एकस्मिन् so you can say एकस्मिन् उपनिषदि प्रमाणम् अस्ति एकस्मिन् उपनिषदि प्रमाणमस्ति सम्यक् वंडरफुल अस्तु सुंदर जी कृपया वदतु पात्रम् अपि च सेविष्यते सेविष्यते So saha, so sevishyate will have to go with saha. So therefore saha, saha can we take guru? You can say saha gurum patram sevishyate. Saha gurum Gurum sthanam, it's like he will do seva to guru's patram. Yeah, meaning what symbolizes the guru. It is better to say saha gurum sevishyate. Saha gurum sevishyate. Then comma so
पुनः पात्रं भविष्यति. You will become कृपापात्रं भविष्यति. You can say that. भविष्यति. Sorry, भविष्यति. कृपापात्रं भविष्यति. Because patram and to sevishyate, to do seva. Yes. It is. It doesn't make sense to do seva to a patram. Like sthanam, you can. We do tirtha sthanam, right? So do we say tirtha patram sevishyate? But will you do seva to it, or will you do some specific kriya to it, like cleaning? Because if you want to see patram, it becomes an object, and doing seva to the object. Yeah, correct. That is a bit hard. But samyak saha gurum सेविष्यते कृपापात्रं भविष्यति. अस्तु. संध्या जी कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? किमस्ति प्रश्नः? Yeah, same one, like it got clear. Patram. अस्तु. भवती वदतु संध्या जी. स्थानम् अपि च एकस्मात्. स्थानम् अपि च एकस्मात्. स्थानम् एकस्मिन्. एकस्मात्. Sorry, एकस्मात्. तत्र गुरुस्थानं स्थानम् अस्ति. गुरु एकस्मात् ध्यानं करिष्यते. Okay, it's a good idea. एकस्मात् is कस्मिन् विभक्ति? एकस्मात् is पंचमी विभक्ति. So you have to use panchami in that shabda. एकस्मात् कम्मी he is doing. So गच्छति. Like that you can use some एकस्मात् नगरात् गच्छति. पुनः कस्मिन् शब्दः अस्ति? स्थानं. पुनः तीर्थस्थानं गच्छति. एकस्मात् नगरात् तीर्थस्थानं गच्छति. Okay. Easy. From this ekasmat nagarat तीर्थस्थानं गच्छति. You can see. There are better ones, I'm sure, but this is what is coming to you. अवन्तिका जी कृपया वदतु. पदम् अपि च लप्स्यते. अवन्तिका जी कृपया अस्ति वा? अस्तु, मेबि सम् कनेक्षन्. सुमञ्जय जी कृपया वदतु. पदम् अपि च लप्स्यते. एकवाक्ये. मुमुक्षुः वेदान्तस्य अध्ययनं कृत्वा मोक्षपदं लप्स्यते. सम्यक्, बहु सम्यक्, वण्डर्फुल्. वेदान्तश्रवणं कृत्वा वेदान्त क्या कृत्वा? साधनस्य कृत्वा वेदान्तस्य श्रवणं कृत्वा अध्ययनं कृत्वा. सम्यक्, वेदान्तस्य श्रवणं कृत्वा मोक्षपदं लप्स्यते. बहु सम्यक्. अस्तु, आभाजी कृपया वदतु. प्रमाणम् अपि च वर्धिष्ये. Little hard, but I think you can do it. Pramanam vardhishye. Pramanam vardhishye. Both in one sentence you have to use. Vedanta pramanam punyam vardhishye. Vardhishye is uttama purusha ekavachana. Like aham vardhishye. So vedanta shravanam kritva aham vardhishye. Vedanta shravanam. Sorry, vedanta pramanam
सम्यक वेदांत इस दर्शनम बात कृत्वा। का प्रमाण है कि इससे पुण्य बढ़ता है। बढ़ता है, ठीक है, लेकिन वर्धिष्ये इज उत्तम पुरुष। इफ बढ़ता है इट विल बी वर्धिष्यते, बट दे आर गिवन वर्धिष्ये। What you said is correct. Vedanta Shravanam Kritva Punyam Vardhishyate, not Vardhishye. Aham Vardhishye. ओके, मेरा पुण्य बढ़ा है ऐसा कहना पड़ेगा। नहीं, मैं बढ़ूंगा, मतलब वर्धिष्ये मैं, आई विल ग्रो। वर्धिष्ये मेरा पुण्य बढ़ेगा, विल आल्सो बी मामा पुण्यम वर्धिष्यते। ओके, But here they say you have to use the word Vardhishye. So Vardhishye is always Uttama, like Sevishye. It is for Uttama Purusha Ekavachana. So Vardhishye will not go with Punyam. It will only go with Aham. If Punyam comes, then it will be Vardhishyate, not Vardhishye. Any question? overwhelmed. There's a lot to catch up. Okay. It's okay. See, you just have to compare it with whatever has been given. They say, you see in page 36 that save dhatul rit lakara, they have given sevishyate, sevishyate, sevishyante. Sevishyate, 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 sevishye. So this vardhishye is like sevishye. Sevishye is for aham. Uttama purusha ekavachana. So aham sevishye. So vardhishye also will be aham vardhishye. I will grow. So you can say Vedanta Shravanam Kritva or Vedanta Pramanam Samyak Darshanam Kritva. Having seen Vedanta Pramanam properly, I will grow. Yeah, Bhavan Guruhu Pramanam Asti. Aham Vardhishye. Guru is Pramanam. So I will go. Punaha Aham Vardhishye. You can say that way. So Vardhishye will always go with Aham. Thank you. We see the Sandhi now. Jhalam Jashonte 8.2.39. This is the Sandhi Sutra 8.2.39. Yesterday we had seen a little bit. I should have shared screen today, but I forgot. We had seen this Jhalam Jashonte yesterday, Jhalam Jashonte Sutra. Jhalon 1, 2, 3, 4 Ushma. So this whole thing will be given in the ashtadhyayi.com. You will see now. Jhalon को जश हो जाता है, होते हैं जल यदि पद के अंत में हो तो example they are given Jagat Ishaha will become Jagadishaha. This the will go and the kara comes. So takara goes away and the third akshara of tavarga which is the, that will come. वैसे ही षट darshanam, so takara goes away which is the first akshara and the third akshara which is the, that will come. Shat darshanam will become shad darshanam. ashtadhyayi.com 8.2.39 Jhalam Jashonte Kimasti Jhal. So this is all Jal. Varga Chaturtaha, Varga Tritiyaha, Varga Dvitiyaha, Varga Pratamaha, Ushmana. Sarve Jhal asti. So Varga Chaturta, the fourth, third, second, first vessel of each Varga. And Jash is only Varga Tritiya. The third alone is called Jash. So all five, whatever there is in that Varga, that will all become Varga Tritiya when this Jhal Shabda is following it. They have in Laghu Siddhanta Kaumadi, Padante Jalam Jashaha Syuhu. There is nothing. That means the Pada Anta, end of the Pada, when it is Jala, it will become Jashaha Syuhu. Examples they have given. So, ये देखिए कवर्गीय वर्णस्य स्थाने गकारः विधीयते, किन्तु गकारः अस्ति तृतीय अक्षर ग क क ग क ख ग, तो वाक् विल बिकम वाग्. जैसे वागादीनां बृहदारण्यकोपनिषदि बहुप्रयोगः अस्ति. वागादीनां नृपः प्राणः अस्ति, वागादीनां प्रथमः प्राणः अस्ति. वैसे so pranah is prathama. So there they will not say vak adinam. Vak adinam nasi. Vagadinam. The ga kara will come in ka when there is next word starts with swara.
If the second word starts with swara, then jhal becomes chush. जैसे चवर्गीय वर्णस्य स्थाने जकारः विद्यते. च छ ज झ ङ, everything will become jakara. It will all become jakara. वैसे ही तवर्गीय वर्णस्य स्थाने डकारः विद्यते. तवर्गीय वर्गस्य स्थाने डकारः, पवर्गीय वर्गस्य बकारः. सर्वे तृतीय अक्षरः भवति. लिड् become लिड्. तत् तद्. त्रिष्टुप् त्रिष्टुब्. Examples are given in अष्टाध्याय्यात्. अपि च शकारस्य जकारः विद्यते. षकारस्य डकारः विद्यते. सकारस्य डकारः विद्यते. This also, but this is another sutra. This sutra will not get into this. Vrishcha bhrasja, vrashcha bhrasja. That sutra will also act here. That we will see later. So for now, we can see this much. Whenever in any varga, कोऽपि वर्गस्य कोऽपि अक्षरः भवति, परन्तु द्वितीय शब्दे प्रथमः स्वरः अस्ति. पुनः वर्गस्य क ख ग घ ङ कोऽपि अस्ति. प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पञ्चम सर्वे तृतीय अक्षरः भवति. Simple. Examples we will see in the book. सुंदर जी कृपया वदतु. प्रथमः अच् अन्तः किं भवति? अजन्तः. अजन्तः. सम्यक्. अपि च भवानेव वदतु. दिग्गजः किं भवति? विच्छेद. It's दिक् प्लस् अजः. सम्यक्. दिक् अजः दिग्गजः. सम्यक् अस्ति. अस्तु. केतुजी कृपया वदतु. द्वितीय इक् अन्तः. इगन्तः. ईगन्तः. अपि च तद् तदेकं. तत् धन् एकम्. हाँ, सम्यक्. तत् एकं तदेकम्. अवन्तिकाजी कृपया वदतु. दिक् अम्बरः. अवन्तिकाजी अस्ति वा? Yes. हाँ. Sorry. 1 minute. Sorry, here is lot of noise. Could you repeat? दिक् अम्बरः किं भवति? दिगम्बरः. दिगम्बरः. सम्यक्. सच्चिदानन्दः किं भवति? विच्छेद करना. सत् चित् आनन्द. सत् चित् आनन्द. दिस इज ऑब्वियस, बट सत् चित् चित् प्लस आनन्दः बिकम्स चिदानन्दः. अस्तु. संध्या जी कृपया वदतु. वाक् ईशः किं भवति? वाक्, right? It is वागीशः. वागीशः. सम्यक्. अपि च जगदीशः विच्छेद किं भवति? जग प्लस सॉरी आदेश. हाँ, किं भवति? सॉरी. जगत् प्लस आदेशः. जगत् प्लस ईशः. ईशा. जगत् ईशः जगदीशः. अस्तु. सम्यक्. भवती एव वदतु. भवती एव. दिक् ईशः किं भवति? दिगेशः. सम्यक्. दिगीशः. अस्तु. आबाजी कृपया वदतु. सत् आचारः. सदाचारः. सदाचारः. सत् आनन्दः. सत् प्लस आनंद. Is there some other thing that can also be here? Any other options? सत्. सत् is there. सत् आनन्दः सम्यक् अस्ति. कोऽपि अन्य? सदा आनन्दः will also be सदानन्दः. Okay. अकः सवर्णे दीर्घः. We had seen, right? Shodash, I think. When there are two as, there also will be. Of course, avagraha may come, but without avagraha is also correct. Sada anandaha api cha sadanandaha asti. Sat anandaha api cha sadanandaha asti. Sada, always happy. Sada anandaha. Yes. Samyak. सुमंजय जी कृपया वदतु. षट नहीं, ये एग्जाम्पल है. उद्देश्य नहीं, ये भी सॉरी. सत उपदेशः.
सदुपदेशः अपि च दिगन्तः दिक्अन्तः अस्तु. So Jalam Jaswanti is quite simple. Once we get the hang, it is very easy. If it is a word and you see the in Bhashya Tika, maybe we can see Bhashya. Can everyone see Bhashya? Same as yesterday, same page as yesterday. In Bhashya, first in Srimad Bhagavad Gita we'll see where is Jalam Jaswanti. Itself, Sthita Pragyah Tat Uchyate. So Tat Uchyate. So Tadochyate. No, there is some mistake here, I think. Yes. Sita Pragnasya Tadochyate will be not if it is Tat Uchyate, it will be Samyak. If it is Tat Uchyate, it will be Taduchyate, but it is Tadochyate. Tada Uchyate, Kasmin Sandhi Sutra asti? A, U, O. Tada Uchyate. कोऽपि अपि वदितुं शक्नोति, वक्तुं शक्नोति. एनीवन कैन आंसर. तदोच्यते कस्मिन् समये? आदौ. सम्यक्. ऑनलाइन एनीवन? यू हर्ड मी. तदा उच्यते आद्गुणः सूत्र अस्ति. तदा उच्यते आद्गुणः. अस्तु. हाँ, जलां जशवन्ते कुत्र अस्ति? चेज्यया. चेज्यया हि च ईज्यया. That will be आद्गुणः again. Saditi chocyate 1727. Correct. Sat iti uchyate. सम्यक्. सद् इति उच्यते. सत् इति. Second line tadarthiyam tat arthiyam. सम्यक्. तदर्थीयं तत् अर्थीयं. बहु सम्यक्. And then sat iti eva abhidhiyate. Yes, correct. सद् इति एव. एकः श्लोके एकं श्लोके तृतीय तिस्रं त्रय नपुंसकलिङ्ग will be what? त्रय, right? त्रयस्सन्धिसूत्राणि सन्ति. हाँ, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति. In बृहदारण्यकोपनिषत् 513 पेज नंबर कुत्र अस्ति? त्रीणि, sorry, earlier it was त्रीणि. एकस्मिन् श्लोके त्रीणि सूत्राणि, त्रीणि त्रयः दृष्टान्ताः सन्ति. Okay, now in बृहदारण्यकोपनिषत् Jalam Jaswante. What page is it? 513. पंचशतं त्रयोदश. उपनिषद्वाक्यं ननुपनिषद्वाक्यम्. उपनिषत् ननूपनिषद्वाक्यं. No, so it's Upanishad plus Vakyam, right? No. Correct. It is Upanishad plus Vakyam. Nanu Upanishad Vakyam Brahmatmaikatvam, whatever. So that will not be Jalam Jaswante, because in Jalam Jaswante you need Swara. This will be the other sutra that will come maybe tomorrow on Monday, I think. Upanishad Vakyam. Maybe it is not there. I don't know. It is possible that it is not there, but it might be. This Viruddhartha Dhiratyasha Shankhaya end word? Kutra asti? This one. Palitma last that. Viruddhartha dhir iti ashankyaha. Viruddha ashankyayaha. Nasti. Viruddha artha. This is akaha savarne diriya. Viruddha artha dihi iti ashankyaha. Iti ashankya is eco energy. Dir iti ashankya. हाँ. There is last line. There is in tika. Vidita pada tadartha sangate tat artha sangate. Samyak. Correct. Exactly. Vidita pada
तदर्थ संगते, तत् अर्थ संगते, सम्यक्. Here also I think वाक्यार्थ न्याय विद अतः, sorry, that is not right. वाक्यार्थ अन्याय विदः तदर्थे. Yes, तदर्थे. तदर्थे. Correct. Wherever tadarthe is there, it is all. There is one more that I thought I saw somewhere else. Sakshat pratipadayat arthat. This one. The same thing will come with tad bodhakatvam. Tad bodhakam eva. Tad bodhakam will not be jalam jashonte because there is not swara. It doesn't have swara. Tad bodhakam will be jalam jashi. That other verse of this sutra. This one I think. Sakshat pratipadayat arthat. In Tika, second paragraph, second and third lines. Sakshat pratipadayat arthat karmakanda pramanya vighatakam iti. So that sakshat pratipadayat arthat. Yat arthat. Yad arthat. Yes. So there are examples. If there are no questions, we will meet again on Somvare vayam medishyam. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashyatau Vande Bhagavantau Punah Punah. Ishvaro Gururatmeti Murtibheda Vibhagini Vyomavadvyaptadehaya Dakshinamurtaye Namah. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Om.